will go here, right? And I'll explain, I'll come to each and every file of the SRC and explain you, okay? And then we have something called node modules. So node modules have all the libraries, their version, because see, React or your application, right, need to use certain libraries to run, to function, right? And those libraries can get installed in the node modules, and that get derived from the package.json file. So whatever the dependency that you specify in your package.json, that dependency will get installed. After that, you have this public folder, okay? And this is just a first time exercise so that at least you are aware about the folder structure of React, okay? And aware about each and every file that it generates. Favicon Ico, pretty straightforward, simple. This is the icon. No need to just explain this stuff. Index.html. This is the, okay. So whenever we run any page, right? When we create any React application, what finally it generates? Because browser understands HTML, browser understands JavaScript, right? Browser does not know anything about React, right? It has nothing to do with React because uh, every time you can't have a new version of browser, right? And every other day there is a one or the other JavaScript library like the gives update, right? There are hundreds of JavaScript libraries, so it's not possible for browser to know about all those libraries, right? Browser knows only about HTML, browser knows only JS, browser only knows CSS. You need to provide somewhere those information in the HTML, CSS, and the JavaScript format. That's what these JavaScript libraries do. They they have some kind of a way of writing down the JS code, okay, so that they can emit a combined HTML file, combined JavaScript, and the combined CSS that is understood by the browsers. And there will be some middleman in between in the UI libraries that will convert those to those relevant format. Okay. So we have this index.html, typical boilerplate code for the index.html. One interesting thing to notice here is this div ID root. So this particular HTML element has only one of the element called root element, uh, div with ID root, and we'll see where this root element is and how the content is loaded inside this root. For now, just remember that index.html has only one division element, that is root. Yeah, CD session app start and film start. Yeah, I'll come to starting the React application. Okay, and even if you are not able to do the React setup, create React app setup and the npm node setup, just try to do it offline. Okay. For first session, probably you don't require direct hands-on coding. We can use the sandbox URL, and from later on, when you will require, you can set up it offline. Okay. And for any doubts, you can reach out tomorrow. Okay. Now let's come to this logo file. Logo file is for the React application logo. 192 says 192 cross 192 logo. 512 call, 512 pixel call, 512 pixel. These are generally, I'll explain how these are used. Anyone knows about this manifest.json file? This is one of the interesting files. And it is often ignored in the React world. It is often ignored by most of the people. So any one of you know what is this manifest.json file? No idea about this. Okay. Yeah, because see, this is one of the interesting file, but mostly it is ignored by all the folks. Okay. This is not a concept of React altogether, but what manifest does, because see, have you seen the previous web applications? Previous web applications were normally rendered in a browser. We talked about normal HTML pages, then JSP, ASP, right? And then single page applications. Now it's the era of progressive web app. Have you heard of this term, progressive web app, PWAs? No? Okay. So now if you'll visit any of the website, right, you can see
a download option in the URL itself. So I'll just try to open one of the URL here. Can you see this icon? Download icon, install YouTube here. Can you see this? Install YouTube, right? Now, earlier, all other pages don't have this option of installing. Okay, certain pages have this option of installing, right? You are running something in a browser, and how it is allowing you to install what it will install, right? It's not an application. Even if you'll open in your mobile browser, it will give you option to download, right? Download the app. But how you can download our website, right? Till now we only know right click, view page source, okay, or copy or save page as, right? HTML and the CSS we can just copy and save, right? But how to download a particular web application? That's what where the PWA kicks in, okay? And for that, this manifest file is one of the interesting file. It tells the browser that, hey, I have this manifest information, okay? You can use this manifest information to install, okay? And multiple things will be provided in this manifest. Some older browser don't understand this, okay? So they will just ignore this manifest.json file altogether, okay? That is not going to hamper your application in any way. And some newer browser will understand this manifest.json, okay, and try to like give you the install option and other thing. So whenever you want your users, because see, we are creating website for users, right, to improve the user experience. So whenever you want the users to give this experience, you can use this PWA concept, and you can specifically use this manifest.json file. And there are some other files as well for the PWA. This is one of the files. So this is short name for my application, full name for my application, and this is the icon. So app can be installed in multiple devices, right? Mobile devices, desktop, right? So the screen sizes will vary. So based upon the screen sizes, it will try to pick the best icon for you. Okay, there are multiple icons. It will try to find the best icon and try to pick the best icon. Okay, and then start URL from where you want to start. Display, it will be displayed as a standalone application. Standalone means it will have own kind of UI. It won't have that Chrome browser on top. So many a times whenever you have opened the website in mobile nowadays, you must have seen that, right? The view looks like an application, although it is running in a browser, but the view looks like application. It does not have the Chrome bar, right? This entire area of the screen is covered by the app, that website only. Have you guys experienced this? If for some of the websites, whenever you open in mobile, right, it will have a look and feel that looks like a native app, looks like an application, but it is running in a Chrome. Yes, for Flipkart, for Twitter, for Mintra, for many other sites nowadays, right? Almost all the sites, because this is going to be the new era. All the sites will be built PWAs. So we technology is all about it. It will keep on changing, right? So this new era is about the PWAs, right? And Chrome is the browser that supports all the PWAs. So now PWAs can open the camera, because see, earlier JavaScript was very restrictive. Restrictive why? Because JavaScript has immense power, right? And you can misuse the JavaScript to do multiple kind of a hacking. So that's what the earlier the JavaScript was made more restrictive. But nowadays, with security practices, it is trying to slightly open up. Now your PWS can open the camera. Now your PWS can access your location. PWS can even access to your Bluetooth devices and other things. Okay. We'll cover that PWA part if it will be in course. PWS not
इसका काम बस इतना है, जो इंडिया में उस बैनर का काम होता है जिसपे लिखा हुआ होता है कि यहाँ थूकना मना है, ठीक है। सो robot.txt फाइल tells the robot कि hey, user agent star means all the, yeah, exactly like the holding. So user agent star means all the robots. Disallow means I will not allow the robots to scan my website. Okay, you should not scan my website. You should not just scroll through my content. So this is kind of a information that you're providing to robots, right? So robots कौन कौन होते हैं पता है? robots क्या होते हैं? crawlers क्या होते हैं वेब पे? select all the traffic light. Bots, right? Crawlers and the bots. तो crawler bot क्या है? जैसे देखो, तुम्हारे पास गूगल का क्रॉलर है, तुम्हारे पास एडवर्टीजमेंट के लिए क्रॉलर होता है, तुम्हारे पास सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी चेक करने के लिए क्रॉलर्स होता है, राइट? देयर आर मल्टीपल क्रॉलर्स ऑन नेट जो रन होते हैं, डेटा फेच करते हैं. दीज क्रॉलर्स आर समटाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज तुम्हारा वेबसाइट का रैंकिंग इंप्रूव हो सकता है अगर गूगल का क्रॉलर स्कैन करता है एंड इट फाइंड्स योर कंटेंट मीनिंगफुल, तो इट विल इंक्रीज द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एज वेल. सो ये एक इंफॉर्मेशन है क्रॉलर्स को कि हे यू डोंट नीड टू स्कैन एनी ऑफ द पैकेज. बट मैंने ये क्यों बोला ये होर्डिंग्स टाइप है, वो बैनर टाइप है कि यहाँ थूकना मना है? बिकॉज जब भी कोई एविल बॉट होगा, ठीक है, जब भी कोई बैड क्रॉलर होगा, मतलब कोई हैकर होगा या something for the system penetration testing or something like that will run, they won't respect this robot.txt file altogether. ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है इस robot.txt फाइल से, वो जाएगा अपना काम करेगा. तो इट्स जस्ट एन इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो तुम नॉर्मल बॉट्स को, नॉर्मल क्रॉलर्स को प्रोवाइड करते हो. सेम इन होर्डिंग्स, राइट? यहाँ थूकना मना है, तुम बस वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, बट मानता कौन है? कोई नहीं. एग्जैक्टली सेम विद दिस robot.txt फाइल, ठीक है. तो इसको यूज करना न करना बात बराबर है, ठीक है. यू कैन जस्ट ओमिट दिस फाइल एनी टाइम. यू कैन जस्ट गेट रीड ऑफ दिस manifest.json फाइल एज वेल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज एनीवेज वी आर नॉट डीप डाइविंग और वी आर नॉट यूजिंग ऑल द pws फीचर. तो अगर तुम इसको ओमिट भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. देन लेट्स कम टू आवर मेन फोकस पॉइंट, src फोल्डर. So src you can see some file like app css, app js, app test, right? So all these three start with the app, right? So in React is a JavaScript libraries, right? So mostly it is going to be based around on JavaScript, right? So that's what we have this interesting file called .js, and sometimes you can see it as a .jsx as well. Okay. Now first talk about what this particular file is. Okay. This is called a component. Okay, we use the terms component, right? React component. Anyone knows what component is? Component पता है क्या होता है? Okay. Unit of React. मतलब ठीक है, React के अंदर लिखा हुआ है तो React का ही होगा. Which connect node to node. नहीं, which connect node to node is not the rightest. Which returns JSX. Again, not correct. Every element is component. Not exactly. Function which return valid JSX, kind of a true. Okay. देखो, अब मेरे से अगर तुम पूछो, राइट, कि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है या समझना इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों का व्यू क्या कहता है? डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है या समझना इंपॉर्टेंट है? समझना, राइट? आई से दोनों इंपॉर्टेंट है. समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज इफ यू नो द कंसेप्ट, ओके, तभी तुमको समझ में आएगा. सिर्फ डेफिनेशन रटने से काम नहीं चलेगा, राइट? एंड द सेकंड इज व्हाई द डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज सी डेफिनेशन किसी ने दिया है उस चीज को समराइज करने के लिए, राइट? डेफिनेशन डेफिनेटली तुम ढूंढ पाओगे और वही चीज होना चाहिए. तो जब तुम कंसेप्ट समझोगे, उसके बाद डेफिनेशन को गो थ्रू करोगे, तब बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी और वो माइंड में याद रहेगा. उससे पहले अगर तुम डेफिनेशन देखोगे तो वो सिर्फ रटना होगा. तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज एंड देन we'll see what definition is. Cool. So let's come to this file. I told you, right, this is a component, right? तो फैंसी वर्ड यूज नहीं करेंगे, इस फाइल को आते हैं, ठीक है.
ओके, अभी के लिए मैंने उसको हाइड किया है, ठीक है, सिर्फ इस फाइल को फोकस करते हैं। ओके, यहां देखो, फंक्शन ऐप, राइट, मीन्स इट इज अ फाइल। ఓ నాది బాగా టైం ఉండదు నీకు ఇస్తావు వేరే ఇయర్ ఫోన్ చూసుకో ओके, you guys can see the screen. तो इस क्लास में क्या है, एक फंक्शन है, राइट, एक फंक्शन है, एंड देन यू हैव, इट इज रिटर्निंग सम काइंड ऑफ अ फैंसी div एलिमेंट, राइट, एक div एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, राइट। ओके, सो इट्स अ फंक्शन, ठीक है, दैट इज रिटर्निंग यू अ element, UI element, okay, and this is inside a file, right? So normally components are JavaScript function, okay, और क्लास, यहाँ पे क्लास यूज नहीं हो रहा है, जब हम लोग दूसरा कंपोनेंट देखेंगे तो उसमें हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे, ओके। JavaScript function or class, okay, which returns a UI element, okay, or which returns the JSX, मतलब इसको JSX बोलते हैं, JSX सिंटैक्स, तो इसको बोलते हैं ये एक सिंगल UI एलिमेंट रिटर्न करता है। So components are the building blocks of React, right? Because React में क्या है, सब कुछ component based है, right? So component are the building block of React, okay, which is nothing but a क्या है, JavaScript function, right? JavaScript function और a class, class का component कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, which returns a UI element, okay, which returns a UI element, right? एक UI element रिटर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ट्राई करूंगा, ठीक है, एक और UI element रिटर्न करने का, मल्टीपल, तो देखो ये एरर आ गया, राइट। दैट मीन्स एवरी कंपोनेंट कैन रिटर्न अ सिंगल UI element, करेक्ट। तो वो यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ तो मल्टीपल UI एलिमेंट्स है, यहाँ पे एक हेडर टैग भी है, एक इमेज टैग भी है, एक पैराग्राफ टैग भी है, राइट। ओके, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन, ओके। components are the building block of React, right? building of block of React क्यों? बिकॉज सब कुछ रिएक्ट में क्रिएट किस पे हो रहा है, कंपोनेंट पे, राइट। कंपोनेंट लिख के ही हम यूआई एप्लीकेशन बना रहे हैं, सारे व्यूज को रेंडर कर रहे हैं, राइट। सो हर एक छोटा जो ईच है दैट इज अ कंपोनेंट। सो components are the building block of a React application, right, which is nothing but a either a JavaScript function, right। JavaScript function क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक मुझे दिख रहा है एक फंक्शन है, राइट, और a क्लास, क्लास वाला हम लोग सेपरेटली कवर करेंगे, which returns a single UI एलिमेंट। सिंगल UI एलिमेंट मतलब क्या, एक सिंगल UI एलिमेंट रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर तुमको मल्टीपल एलिमेंट रिटर्न करवाना है तो जस्ट नेस्ट देम इन अ एलिमेंट, जैसे इसको एक डिव के अंदर नेस्ट कर दो, डिव के अंदर रैप कर दो, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न कर रहे हैं। क्लियर है। कंपोनेंट, कंपोनेंट का बेसिक डेफिनेशन क्रिएट है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कंपोनेंट में, ओके। अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस किया है, मैंने स्पेसिफिकली जान के नहीं बताया है वो, क्योंकि बहुत बार जब डेफिनेशन देखोगे तो उसमें दिया हुआ होगा कि इट पासेस सम इंफॉर्मेशन यूजिंग प्रॉप्स एंड ऑल दोस शिट्स, राइट। तो मैंने भी जान के वो नहीं लिखा है क्योंकि हमने वो कवर नहीं किया। व्हेन वी विल कवर दैट, we'll try to get one step further into the definition and I'll add that particular point in the definition। तो पहले समझेंगे फिर उसका डेफिनेशन देखेंगे कि रियल में है क्या। कूल। कंपोनेंट क्या है ये क्लियर है, ठीक है। अब नॉर्मल सिंटेक्स की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, इंपोर्ट लोगो फ्रॉम लोगो डॉट एसएफजी, राइट। तुम अपने रूट देखो, ठीक है, तुम्हारे पास लोगो डॉट एसएफजी फाइल है, यहाँ पे है, राइट, रूट डायरेक्टरी में। तो तुम एक डायरेक्टरी फर्दर गए, ठीक है, तुमने बोला कि वहां पे लोगो डॉट एसएफजी फाइल है, उसको इंपोर्ट कर लो, ठीक है।
क्योंकि नॉर्मली अगर तुम जावास्क्रिप्ट में ये कोड लिखोगे तो काफी डिफिकल्ट जाएगा, इसीलिए रिएक्ट या कोई भी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज बनी है, राइट, तुम्हारा काम आसान करने के लिए। ठीक है, तो तुमने ऐसे लोगो को इंपोर्ट कर लिया, तुमने ऐप डॉट सी एस एस को इंपोर्ट कर लिया। ऐप डॉट सी एस एस को इंपोर्ट करने से क्या फायदा हो गया, क्योंकि अब ले सपोज कि तुम और तुम्हारा फ्रेंड ऐसे करके 5-10 फ्रेंड या एक कंपनी में ले सपोज 50 डेवलपर काम कर रहे होंगे, राइट। तो व्हेन एवरीवन विल राइट देयर ओन कंपोनेंट, राइट, और वो इंडेक्स डॉट जीएस में जाकर के या इंडेक्स डॉट सीएसएस में जाकर के सारा कोड लिखने लगेंगे, राइट, बिकॉज सीएसएस नॉर्मली एक सेंट्रल फाइल लोग बनाते हैं, तो वो कितना गंदा दिखेगा, राइट। 10 लोग 20 लोग एक बार में कंट्रीब्यूट करेंगे एक फाइल पे, राइट, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ रिएक्ट इज दिस, तुम क्या बोलोगे, तुम अपना कंपोनेंट क्रिएट करो, तुम अपना सीएसएस फाइल बनाओ, ओके, एंड इट विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट कि तुम्हारा जितना भी तुमने सीएसएस कोड लिखा है वो इसमें एक्सेसिबल रहे एंड नॉट आउटसाइड। ठीक है, ये रिएक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट समझ में आया, अब बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुआ, बेसिक स्केलेटन ऑफ रिएक्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, और इसका डेफिनेशन हम लोग इनहेंस करेंगे जब हम लोग एक्चुअल में कंपोनेंट लिखेंगे, ये तो जस्ट प्रोवाइडेड कंपोनेंट है, राइट। ओके, कम टू दिस test.js फाइल, नाम से क्लियर है, राइट, फॉर टेस्टिंग द रिएक्ट एप्लीकेशन। तो अभी वी नीड नॉट टू वरी अबाउट टेस्टिंग दिस रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, index.css, सेंट्रल सीएसएस फॉर आवर, प्लीज रिपीट कंपोनेंट। ये कवर हो गया, राइट, कंपोनेंट वाला पार्ट, कि अभी भी डाउट है कंपोनेंट में? कुलदीप, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। Sir, ओके, sir, component यस, are building block of element. So, sir, I didn't understand what is this. ओके, सी, देखो, तुम्हारे पास एक पूरा रिएक्ट एप्लीकेशन है, राइट। रिएक्ट एप्लीकेशन, व्हाई इट इज यूज, रिएक्ट एप्लीकेशन का यूज क्या है, टू Single page क्रिएट द application बनाना है. सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना या यूआई व्यू बनाना, राइट। Correct, sir. तो इमेजिन करो, जो तुम्हारा सिंगल पेज एप्लीकेशन या कंप्लीट यूआई व्यू है उसको घर, राइट, उसको एक हाउस इमेजिन करो, एंड Okay. हाउस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, राइट। Right. तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ब्रिक्स क्या है, राइट, तो तुम बोल सकते हो कि घर का बिल्डिंग एलिमेंट है, राइट, बिल्डिंग ब्लॉक है। Yes, sir. घर को बनाने के लिए ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक। सेम वे तुमको पूरा यूआई व्यू रेंडर करने के लिए, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, Okay, sir. तो कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द रिएक्ट एप्लीकेशन, राइट। Okay. गॉट दैट? Got it, sir. कूल। ठीक है, फिर आते हैं Thank you, sir. index.css फाइल पे। index.css फाइल, नाम से क्लियर है, राइट। index.css फाइल क्या है, एक तुम्हारे पास index.html है, उसके लिए जो सेंट्रल सीएसएस है that is written in the index.css file, and then you have the index.js, right? I'll come to this. logo.sfg क्लियर हो ही गया। रिपोर्ट वेब वाइटल्स, ये तुम्हारे कुछ क्रिटिकल मैट्रिक्स को एमिट करने के लिए यूज होता है। अगेन टोटल फैंसी थिंग, यूज करना है करो, नहीं करना है मत करो। सेटअप टेस्ट, टेस्टिंग सेटअप के लिए रिक्वायर्ड है। जब हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन टेस्ट करेंगे तब में भी रिक्वायर्ड होगा, अभी के लिए यू कैन जस्ट गेट रिड ऑफ दिस फाइल। गिट इग्नोर फाइल, गिट इग्नोर फाइल पता है, देखो ये सब रिएक्ट से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग दोस कांसेप्ट, ठीक है, ताकि कभी भी, राइट, कोर्स का एजेंडा क्या है, राइट, ताकि सीखो, ताकि जाकर के बाद में तुम लोग भी कहीं काम ही कर रहे होगे, राइट, यू विल ज्वाइन सम कंपनी, सम गुड कंपनीज यू विल वर्क फॉर, राइट। सो ये सारी प्रैक्टिसेस वहां पे आएगी, ये सारी चीजें वहां पे यूज होगी, राइट। दिस थिंग्स आर नॉट रिलेटेड टू रिएक्ट एप्लीकेशन, बट स्टिल लेट्स कवर, एटलीस्ट थोड़ा आइडिया रहेगा कि कभी देखोगे, कभी पढ़ोगे, कभी सुनोगे तो ध्यान रहेगा, अच्छा ये कुछ पता है। सो व्हाट इज दिस गिट इग्नोर? नाम से क्लियर है, गिट इग्नोर। गिट मतलब क्या, अपना नॉर्मल गिटहब, राइट, गिटहब तो पता होगा। सो इट इज टेलिंग द गिटहब, ओके, ठीक है, या तुम्हारा गिट रेपो, कि दिस फाइल शुड बी इग्नोर्ड, मतलब इन सारे फाइल्स को तुमको जब भी तुम करते हो, राइट, गिट स्टेटस फाइल दैट वेयर टू बी इग्नोर्ड बाय द गिटहब, एग्जैक्टली, कि जब तुम गिट स्टेटस वगैरह चेक करोगे कि कौन सी फाइल तुमने चेंज किया है, कौन सा फाइल अपलोड करना है,
So these files will get ignored. These files will not get uploaded. ठीक है? उसके बाद you have two files, package.json, package.log.json. package.json में तुम्हारे पास सारी डिपेंडेंसीज लिस्ट डाउन रहती है. ठीक है? सारी डिपेंडेंसीज मतलब कि जो जो डिपेंडेंसी तुमको अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को रन करने के लिए रिक्वायर्ड है, ऑल दोज थिंग्स विल बी लिस्टेड डाउन इन package.json. This is not a common concept to React only. This is a normal concept for every UI application. ठीक है? सारी डिपेंडेंसीज तुम्हारी package.json में लिस्ट रहती है. package.log.json क्या करता है एग्जैक्टली? package.json का जब भी तुम npm स्टार्ट करोगे, npm बिल्ड करोगे, तो ये फाइल क्रिएट होती है. दैट सेज कि जितने भी तुम्हारे डिपेंडेंसीज है उनका एक लॉक्ड वर्जन क्रिएट हो जाता है package.log.json में. मतलब कि एग्जैक्टली इस डिपेंडेंसी का ये वर्जन यूज होने वाला है, उसको सबको रिजॉल्व करके ये package.log.json में रखता है. इस फाइल को अगर तुम डिलीट कर दोगे तो ये फाइल ऑलरेडी फिर से क्रिएट हो जाएगी. ठीक है? एंड देन यू हैव दिस रीडमी फाइल. रीडमी फाइल इज टू प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन. ठीक है? कि अगर तुमको किसी के बारे में पढ़ना है कि npm स्टार्ट क्या होता है, npm टेस्ट क्या होता है, मतलब रीडमी फाइल में जनरली यू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट. ठीक है? यहाँ पे ये क्रिएट रिएक्ट ऐप का प्रोजेक्ट था, इसलिए इसके डेवलपर ने ऑलरेडी ये सारा पूरा रीडमी में डाल के दिया है कि अगर तुमको कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, तो यू कैन रेफर दिस फाइल. ठीक है? व्हाट इज डिपेंडेंसी? देखो किस ओके, यू हैव सम लिटिल बिट ऑफ जावा बैकग्राउंड या कोई भी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड उमेश? ओके, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं. ठीक है? हटाओ प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड को अभी के लिए. तुमको लेट्स सपोज तुमको कोई काम करना है, राइट? तुमको अगर अपने घर में लेट्स सपोज इलेक्ट्रिसिटी फिक्स करवाना है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम था, वो फिक्स करवाना है, राइट? सो तुम क्या करोगे? यू विल कॉल द इलेक्ट्रिशियन, राइट? या खुद से करोगे? इलेक्ट्रिशियन को कॉल करेंगे. इलेक्ट्रिशियन को कॉल करोगे? नहीं, मतलब ऐसे नॉर्मली लोग खुद ही कर देते हैं आजकल, सब कर देते हैं, बट ठीक है. नॉर्मली क्या करोगे? इलेक्ट्रिशियन को कॉल करोगे, राइट? देन यू हैव अ डिपेंडेंसी ऑन द इलेक्ट्रिशियन, राइट? अगर इलेक्ट्रिशियन नहीं आएगा तो तुम्हारा वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो सकता, राइट? इलेक्ट्रिसिटी के काम करने के लिए तुम इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे, प्लम्बिंग के काम करने के लिए प्लम्बर को बुलाओगे, राइट? अगर Yes. तुम्हारा नल खराब है तो तुम इलेक्ट्रिशियन को नहीं बोलोगे कि नल भी ठीक कर दो, राइट? सो हर एक चीज को रन करने के लिए उसका स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी अवेलेबल है, राइट? एंड दैट्स व्हाट द डिपेंडेंसीज आर. डिपेंडेंसी क्या होते हैं? वो स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी है जो तुम्हारा काम करके देंगे. जैसे रिएक्ट एप्लीकेशन में देखो, तुमने कुछ कोड लिखा, राइट? तुमने कोड लिखा कुछ ऐसा कंपोनेंट में, राइट? या ऑल द पैकेजेस दैट वी इंस्टॉल्ड फॉर द CRA, राइट? एग्जैक्टली. CRA रन करने के लिए जो जो पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं, दोज आर लिस्टेड इन द package.json. जब तुम इंस्टॉल करते हो npm इंस्टॉल या npm स्टार्ट, तो इंस्टॉल हो जाती है. ठीक है? सो यहाँ पे तुमने जब कोड लिखा, राइट, क्या लगता है कि ब्राउजर में ये कोड ऐसा ही दिखेगा? नहीं दिखेगा ऐसा, राइट? सो कोई तो होगा जो बैकग्राउंड में इस पूरे कोड को कन्वर्ट करके उस तुम्हारे फॉर्मेट में डाल रहा है, राइट? यहाँ पे जब तुम एप्लीकेशन npm स्टार्ट करते हो, राइट, तो तुम्हारा रन करता है सिंपल HTML, सिंपल JS, ये सारी जनरेट होती है मिनिफाइड फाइल. ठीक है? जब तुम npm स्टार्ट करते हो, राइट, तो कोई एक सर्वर है जिसपे तुम्हारा एप्लीकेशन डिप्लॉय होता है, लोकल होस्ट पे एक सर्वर चलता है, राइट, जिसपे तुम रन करते हो. तो डिपेंडेंसी क्या है? लोकल होस्ट सर्वर पे भी है, राइट? सो दोज आर द डिपेंडेंसीज. क्लियर हुआ? एंड आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कपल ऑफ डिपेंडेंसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके साथ आती है. ठीक है? कूल. सबसे पहला डिपेंडेंसीज है बेबल. हैव यू हर्ड ऑफ बेबल? इट्स बेबल, नो? ओके, ठीक है. देखो, तो बेबल क्या करता है? देखो, ये तुम्हारा जो JSX है, राइट, ये जो तुम्हारा ये जो कोड लिखा है तुमने, इसको JSX भी बोलते हैं क्योंकि JSX स्पेसिफिकली रिएक्ट का कंसेप्ट है. ठीक है? जिसमें कि तुम इस वे में लिखते हो UI एलिमेंट को. हो सकता है एंगुलर में होल टुगेदर डिफरेंट तरीका है लिखने का. तो रिएक्ट में जो है हम लोग इसको JSX बोलते हैं, राइट? तो नॉर्मली
JSX और भी बहुत सारी चीजें, और बहुत सारी चीजें क्या, बेबल इज अ ट्रांसलेटर, यस है। अब आएंगे समझा करके फिर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे इसका, पहले समझ लेते हैं क्या, ठीक है। तो ये जितना भी JSX वगैरह लिखा हुआ है, राइट, ब्राउजर के जावास्क्रिप्ट, ब्राउजर को ऐसे समझ में नहीं आने वाला है, राइट, ये कोड। तो कोई तो होना चाहिए जो इसको बताए ब्राउजर को कि हे इसका मतलब ये है, राइट। जैसे कि लेट्स सपोज कि अगर तुम चाइना जाओगे, राइट, तो अगर मतलब चाइना जाओगे नहीं, ठीक है, तो आने मन पे क्यों जाओगे, बट स्टिल लेट्स सपोज कि अगर जाते हो, राइट, सो यू वोंट अंडरस्टैंड चाइनीज एंड चाइनीज वोंट अंडरस्टैंड neither Hindi nor English or not your native language, right? Then how you will communicate with them, right? You will use a translator, right? जो क्या करेगा, तुम्हारी बातों को लेगा, ट्रांसलेट करके चाइनीज में बताएगा, चाइनीज की बातों को लेके तुमको ट्रांसलेट करके बताएगा। सो बेबल डज एग्जैक्टली द सेम, इट ट्रांसलेट्स द थिंग, ठीक है। कौन से थिंग वो देखते हैं। सबसे पहला है JSX, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट का जो वर्जन इवॉल्व होता है, राइट, जावा स्क्रिप्ट के जो एक्मा स्क्रिप्ट है, एक्मा स्क्रिप्ट मोदी जी के तरह, ठीक है, नो पॉलिटिकल बायस, ठीक है, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा सर, एक दिन चाइना आना होगा तो फिर जाना पड़ेगा। ठीक है, बट ठीक है, चाइना वाज अ वेरी बैड एग्जांपल, आई नो, ठीक है, प्रोबेबली आई कुड हैव गिवन स्पेनिश या ऐसे कुछ, बट ठीक है, ओके। सो हाँ, वापस आते हैं, ठीक है। किस किस चीज को ट्रांसलेट करता है, तुम्हारे JSX को ट्रांसलेट करता है, और किसको ट्रांसलेट करता है, देखो नॉर्मली जो जावास्क्रिप्ट का वर्जन है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के जो नए नए सिंटैक्स है, ठीक है, वो जल्दी चेंज होते हैं, ठीक है। एंड ब्राउजर का जो अपडेट है वो बहुत लेट आता है, राइट, क्योंकि लेट्स सपोज अभी क्रोम का वर्जन चल रहा होगा, आई गेस 95 या 99 कुछ ऐसे चल रहा होगा, या 110 जो भी चल रहा होगा क्रोम का वर्जन, राइट। बट क्या सबके पास क्रोम का वही वर्जन है, किसी के पास 80 चल रहा होगा, किसी का 75 चल रहा होगा, राइट। तो अगर तुम अपना ये कोड यहाँ पे लिख देते हो, ठीक है, तुमने बोला कि एकदम फैंसी नए नए कोड में लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद तुम इसको रन करने गए, अपने ब्राउजर में रन किया, परफेक्टली फाइन चला, उसके बाद तुमने उस ऐप को लाइव कर दिया, यूजर ने खोला, चल ही नहीं रहा है, राइट, योर ऐप फेल्ड। सो इज इट गोइंग टू बी अ गुड यूजर एक्सपीरियंस? नो, राइट, दैट्स व्हाट यू नीड दिस। और हाँ, बिल्कुल ये सही यूजर एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता था, तुमको बोले कि ऐसा काम करो कि ये सब फैंसी अच्छे कोड जो है ये सब मत लिखो, जाके बाबा आदम जमाने वाली जो पुरानी कोड तरीके हैं उससे कोड लिखो, एकदम नेटिव जावास्क्रिप्ट में, वेनिला जेएस में जाकर के कोड लिखो। क्या वो तुम्हारे लिए पॉसिबल होगा? नहीं, राइट। सो उसके लिए बेबल इज देयर। बेबल क्या बोलता है, तुमको जो फैंसी जावास्क्रिप्ट लिखना है लिख दो, ठीक है, आई एम द वन, I'll take that responsibility of converting or translating. Okay. I'm trying to cover all those things in English only, but yeah, some references probably it's easier to give. Okay, I'll try to stick to English as much as possible. Okay. See, yeah. So Bevel says that hey, you write all the fancy JavaScript, okay, and I'll be the one who will convert that JavaScript or your fancy JavaScript into the JavaScript code understood by the browser. Okay. So Babel acts as a translator. Got it? Babel acts as a translator. ठीक है? Programming language में are there any other translator that we know? Compilers, right? Have you heard of compilers? So what compiler does? नहीं, सेम थिंग इज नॉट राइट। अगर अगर सेम ही होता तो व्हाई आई एम कवरिंग कंपाइलर सेपरेटली एंड दिस बेबल? देयर इज वन एग्जैक्ट डिफरेंस, कंपाइल्स द कोड इनटू द मशीन लैंग्वेज, राइट, एग्जैक्टली यही पे डिफरेंस है दैट आई टॉक अबाउट। सोर्स कोड टू मशीन कोड मतलब, सोर्स कोड मतलब whatever code you will write in your C high level programming language, right, C में, Java में, whatever code that you write, it's get converted to the machine code 0101 इस टाइप वाले कोड में, right, that you don't understand. So those are the compilers, right? And then there is a specific word for Babel called transpiler.
Have you heard of this word transpiler? No. So if you see the definition of Babel, sometimes you will see the word transpiler. Okay. So transpiler is nothing but a fancy word for a different type of compiler. Okay. Transpiler, compiler, right? दोनों में piler है. That it changes something, right? So transpiler is a fancy word for a different type of compiler, right? So different type क्या है? Compiler compiles or translates the code from high level programming language to a machine level code, right? But a transpiler translates the code from one of the language to another language of the same abstraction level. जैसे कि what Babel does, Babel changes from fancy JavaScript to a normal JavaScript, right? Both the input and output is JavaScript, right? One version to another version, right? So what transpiler does, it changes from one programming language or one abstraction level to the same abstraction level, one programming language to other programming language. Okay, JavaScript to JavaScript is case mein, right? That's what the Babel is called, the transpilers. Clear? Any doubt about the Babel? देखो, Babel, Webpack, these are the topics which people clearly miss out, because we start with React, we never find any documentation around that. We just go ahead and start coding, right? And sometimes someone can ask you a very basic question: ki, what is Babel? What is Webpack, right? How this app is running. So this basic lecture I'm devoting to those concepts, okay? And then probably we'll build our entire React application. Yes, I'll cover the Webpack just after this, okay? Okay, and then we can go ahead and build our React application, all the fancy codes, all the fancy components, right? Clear till Babel? Babel में कोई problem? Any doubt in Babel? Concepts इतना clear होना चाहिए. In the middle of the night when someone wakes you up, hey, what is Babel? You should be ready to say what is Babel. ठीक है? वो दिमाग में fit होना चाहिए. That's what I'm just trying to explain each and every bit of that definition, right? Because you understand some concepts here, you go ahead and read the definition somewhere, it says the word transpiler. If अगर तुमको transpiler नहीं पता होगा, right? And you will go ahead and read the word transpiler, you will get confused, right? What this transpiler word is, right? Now, at least when you will go back to the definition, you will know each and every word, and that will be stick to your brain, right? And you translate the JSX, translate the higher order JavaScript or the newer JavaScript version to the previous JavaScript version. Got it. Now let's come back to the Webpack. What is Webpack? Any idea about Webpack? Okay. Huh. So I have this image for the Webpack. Okay. It is written something as the bundle your assets, right? And here is some diagram which has the JS, PNG, SAS, CAJS, and all these codes clubbed together. Okay. And there is some box, right? Which is arranging them in the smaller grids, right? So what Webpack does, right? Your file will have a lot of dependencies, right? Your app.js will have dependencies on some other component will have dependency on some other component, it will have some dependency on the image file, right? Currently, our app.js has the dependency on the app.css and logo, right? Our React application, this, right? App.js has dependency on .css, this logo file. Save this file, it will be related to React. No, this is not related to React. Yesterday, I was trying to create some, at least for some content. So I've created this for the Webpack. At least this image I wanted, so that to show you guys how the Webpack actually works. This is just the downloaded PowerPoint presentation. It has no related content, balancing act and all, right?
So this is just a sample that I have downloaded. This is a single page in this. Okay, I just wanted this image so that you guys understand what the concept is. Okay, come back here. Your app.js, right, has a dependency on CSS, app.css. It has dependency on logo.svg, right? Then finally, there will be multiple other components which will have dependency on other components, right? Because components are nested. ठीक है? React में generally हम लोग क्या करते हैं? हर एक छोटे से छोटे एलिमेंट के लिए we create a component. ठीक है? React का जो thought process है, जितना छोटे से छोटे पार्ट के लिए करो, जैसे देखो, बिल्डिंग ब्लॉक की बात किया था, राइट? बिल्डिंग ब्लॉक्स आर व्हाट? दैट ब्रिक्स इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, राइट? सो ब्रिक्स आर वेरी स्मॉलर, राइट? सबसे छोटा पार्ट है तुम्हारे घर में, इसलिए कंपोनेंट्स आर वेरी स्मॉलर पार्ट थे, वो छोटे छोटे पार्ट है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, उनकी बहुत सारी डिपेंडेंसीज होगी जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है? एंड इट विल लुक लाइक दिस, मतलब ये तो बहुत इजी है इन दैट केस, बट इट विल बी टोटली मेस्ड अप, राइट? JS will have dependencies on some other file, it will have dependency on some other file, right? It is totally it will create a dependency graph, ठीक है? Totally एक दूसरे पे dependent है, right? Then what this webpack will do, it will see, it will analyze your entire dependency graph, ठीक है? And it will arrange all those files in the related files. जैसे एक ये JS के लिए फाइल बना देगा, एक CSS के लिए फाइल बना देगा, एक PNG के लिए तुम्हारे अलग अलग अरेंज कर देगा, तुम्हारे जो भी इमेज है उनको कर देगा। तो तुम्हारे जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स इज व्हाट? तुम्हारा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, तुम्हारा CSS, ठीक है? जब भी तुम वेब में एसेट का कंसेप्ट सुनते हो, सो देता था तुम्हारा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, तुम्हारा नॉर्मल CSS, इमेज, ये सारी चीजें, ठीक है? तो वो उनको सेग्रीगेट करेगा एंड इट विल रिजॉल्व द डिपेंडेंसीज ग्राफ. Cool. So Webpack does what? It analyzes, okay, your dependency graph, okay, and bundles them together in the respective files या respective content, ठीक है? तो Webpack is a static module bundler. Module bundler क्यों? क्योंकि ये modules हैं, right? उसको बंडल करके क्या करेगा? अलग अलग मॉड्यूल बनाएगा, JS मॉड्यूल हो गया, CSS मॉड्यूल हो गया, राइट? फॉर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन, ठीक है? मॉडर्न जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन, ऑब्वियसली अगर तुम सब कुछ पुराने जावास्क्रिप्ट में लिख देते तो फिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती, राइट? व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग in a newer JavaScript, right? Modern JavaScript application, then you need this, right? To convert, to arrange. When Webpack processes your application, it internally builds a dependency graph from one or more entry points, ठीक है? So it will try to create a dependency graph. Dependency graph कैसा होता है? You know what is a dependency graph? So dependency graph is, it will start from a dependency, right? And then all the dependencies that are listed inside that, फिर उसके अंदर जो dependencies होगी, right? A tree like structure or a graph like structure, ठीक है? And then combines every module your project need into one or more bundles, ठीक है? तो तुम्हारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनको एक या एक से ज्यादा बंडल में क्लब करके रखेगा. Which are static asset to serve your content from, मतलब जो तुम्हारे JS स्क्रिप्ट है, CSS है, इन सारे स्क्रिप्ट को सर्व करने के लिए तुम्हारा कंटेंट जो है वो सर्व हो पाएगा. क्लियर है कंसेप्ट? एनी डाउट टिल हियर? ठीक है, टेक 5 to 7 minutes, ठीक है? 8:52 हो रहा है, 9 o'clock we'll go through the doubts, okay, and then we'll take the next piece इसमें, ठीक है? At least React का basic, right? What all things are there? Because see, I am a big believer of the quote, ठीक है? कि if you have 6 hours to cut a tree, ठीक है? Invest 5 hours in sharpening your axe, ठीक है? Not that axe, ठीक है? Axe, ठीक है? तो वर्क ऑन योर स्किल्स, ठीक है? सक्सेस आएगी, ठीक है? वर्क ऑन योर स्किल्स, ट्राई टू बी स्ट्रांग ऑन बेसिक्स, ठीक है? बेसिक्स पूरा स्ट्रांग करो, ठीक है? कैन वी राइट मोर देन वन कंपोनेंट? डेफिनेटली. सिंपल एग्जांपल है, राइट? इन अ हाउस, राइट, देयर आर 1000, राइट? thousands of bricks, right? 1000 क्या, 10,000, 20,000 bricks होंगे, right? So React application can have multiple components,
as many as component as you can write. ठीक है? Even the components will be for a single piece of element. मतलब जितना छोटा से छोटा component बना पाओ उतना better है. React world says कि build smaller components, ठीक है? But build multiple components. Well, feel free to unmute yourself and ask questions. ठीक है? Take 4-5 minutes in clearing all the doubts. कोई doubt? Where we write our main HTML element. This index.html file, right? This index.html is our main HTML file, which has the reference of this root element that I'll talk about right now after this, how this root element performs and how the elements are injected here. Okay. And JS code are everywhere. We have the JS code. This is also a JS code, right? So normally all your JSs, a component, component is a JS thing only, right? So you can write your JS code in your components. And if you want, you can create your separate files for the JS. Actually, we don't write any main HTML. We just write the components and call them in app.js. Am I right, sir? Yes, you are right. But that will cover just after this. So I'll not comment on this right away. I'll explain how that works. Okay. When create a new component, we need to import also from SRC. When create a new component, we need import also from SRC. Rahul, can you explain your question? Please talk a while, sir. We are suffering our ex. We actually got fronted. Pawan, I'm not sure about your question, right? What you're trying to ask. What about online editor? Okay, online editor. Okay, so see, this is one of the online editor, Code Sandbox. Okay, here you can write directly the React applications. Okay, but I'll highly recommend to use Visual Studio Code editor. Okay, and proper React setup, because see, you are going to build a full-fledged application, right? तुमको practice करना होगा, full-fledged application you need to build, right? So it's better to practice in your system rather than relying on some sandbox tool or online editor. Okay, but just to answer, this is one of the online editor, Code Sandbox, and you can see template is React. See, similar folder structure, public folder SRC, you have app.js, index.js, right? You can write your component here. Replit also, there are couple of more as well. There is Code Sandbox and there is one more Code Sand, something like that. You can find the information on the React tutorials as well. Because Node is not supporting in Windows 7. How is this possible? Also Newton dashboard. Yeah, I've not tried on Newton dashboard, but I'm not exactly sure. But yeah, it might support. Node is not supported in Windows 7. Can any one of you confirm? Because I'm not using a, it is supported, right? Because Node is a very famous application. Why it will not support in Windows 7? Yeah, correct. Refer some YouTube tutorials. You'll be able to install. Okay, it's 32-bit. But still, you will be able to download the previous version for the Node. Windows installer 32-bit and 64-bit, right? Yeah, so you have this 32-bit, right? You can try with this 32-bit. Because I see no reason for Node to not work on Windows, because Windows is a very famous platform. Node is a very famous application, right? Okay. How can we change the path in VS Code but giving error? Okay. Anjali, you might refer some YouTube videos to install. I am sure it should work. I have never tried on Windows machine, but in my opinion, it should work. And even if it does not work, there will definitely be some hacks, some workarounds to get it done.
How much days to learn React? Interesting question. See, देखो, अगर सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करने की बात है तो 10 days इज इनफ, ठीक है. बट अगर प्रॉपर नॉलेज की बात है तो इवन अ ईयर इज नॉट इनफ, राइट. मतलब बट बेसिकली 2 महीने, 1 महीने के अंदर तुम अच्छे से सीख जाओगे रिएक्ट, राइट. एंड अगर डेडिकेशन अच्छा है एंड हैव सम बैकग्राउंड उससे पहले, सो यू कैन लर्न रिएक्ट इन मतलब वीक और 10 days. मतलब आई हैव लर्न रिएक्ट आई गेस इन अ वीक. So when I was in my first company, right? So there a project came on the React. I was not aware about React, but I had some interest towards that. So there I learned React in almost a week. I took one of the courses from Udemy, and it took me 1 week almost to learn. 1 week, 10 days max. I'll share the LinkedIn profile later on today. And introduction, ठीक है, मिस हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, that's fine. Do we need to be strong in JavaScript before learning? Not strong, but just have a basic idea. At least your name. My name is Ravi. So Ravi, I'm working in Amazon and currently based out in Seattle, USA. Okay, for now, and sometimes we can talk in detail. I've already covered that in introduction, so no need of repeating it again here. How much deadline you get from Newton School to cover React? I don't have any deadlines. See, it's my first session on this. I don't have any deadlines. Okay, and probably I'm not the guy who will be stuck around some deadline or some course format, right? Yes, currently I'm in Seattle. I try to cover all the parts. Okay, but whenever I see if there is some important point that you need to understand, I'll try to cover that point. Not totally resilient upon the deadline and all. Have you taught any other batch of Newton? No, I have taken some doubt session. That was really good, but it's my first instructor session. We'll try to. We assume we got front dev. I am right an application in React page like today's file. Pawan, I'm still not able to get your question. You wanna try unmuting yourself and explaining your question? Pawan? Okay. Else we'll go to our next section. Okay. Timing over for the doubt session. Okay. I hope no further doubt, right? Okay. Let's come back again here. Okay. Now, now you can see this element, right? Div ID is equal to root. No, my name is Ravi Kumar, not Ravi Shankar. Ravi Kumar Singh, but I don't have the surname in my name currently. So Ravi Kumar, you can find it. Okay. So div ID root, right? So you guys can see this central element, div ID root in this index.html, right? Yes. From next session onwards, we'll do the hands-on. We'll both will do the coding. Today's session is more towards understanding the basics. So when I'm explaining you the Babel, right? When I'm explaining you the Webpack, there is no sense of the practical here, right? When I'll write down the code, we both will do it together. That's what I'm asking you guys to install the software, okay, offline. Why? Because today's session mostly will devote on understanding the basics, so that from the next session onwards, when we'll start deep diving into the code, writing our own components, right? At that time, you can code with me. Okay. And today's session will be mostly on the basics. Okay. I am from Bihar. Okay, but we can understand. Okay, enough of this for now. Okay, and let's jump back again to the code. Okay, we have this index.html file where we have the element div with a id root, right? And this is the central part. This is the central file, right, which get displayed, right? But we don't have any contents here, right? So
So we don't have any content here, right? Then how the contents are displayed? Let's start. I'll just start that React application and let's see how it get displayed. Okay. We'll just do npm start. npm start. So npm start will starting the development server. Okay. Okay. Now you guys can see this, right? Div id is equal to root. Okay. I'll take that question now. One question you will help us in our in-class assignment in regard to React Basic. We are understanding this. See, I'm not exactly sure, RB, how the class format works. I just need to get. It's my first class on the instructor portal, so I'm not exactly sure what all things need to be covered. Do we cover the assignment and all? But I'll definitely help you with any of the doubts or any of the help you will need in the understanding the assignments and all, right? I won't give you the code because that is something that you need to practice. And assignments, the motive is not you just complete that assignment and get the marks or get the grades. Assignment objective is to understand the concepts. No one is going to ask you in interview, hey, have you done this assignment of Newton school? They are going to ask you question to judge your knowledge that you might have obtained while solving the assignment of Newton school, right? So I am here to explain you each and every concept that you will require and that you will use to solve those assignments. And if you will have any doubt, I am there to explain that as well. Okay, cool. Uh, see, you can see this div id is equal to root, right? But after that, if you see, there is something called div class is equal to app, header class is equal to app header, right? From where these things are coming, right? We only can see this root element, right? Yeah, that's what I'm just zooming in, right? You guys can see this, right? Header class app header, right? Zoom text. Can't you see this big text? Boilerplate app creation, just download the node, latest version of node, and then write npx create react app and your application name. Okay. So you have something called div class app. You have something div id root that we have seen, but we have not seen these, right? Div class app, header class is equal to app header. From where these things are coming? Let's try to decode this. So we have our React application here, okay, which has this element div id is equal to root, okay. Now let's come back to this file, our first and only component in this folder, okay, app.js, right? So if you see here, this has something called div class name as app and the header as the class name is equal to app header. So this is for sure. Clear the yellow line. How to clear the yellow line? Apurv, how to clear this yellow line? Okay, anyways, that's not a concerning point for us in any way, right? Is this bothering you guys, this yellow line? Yeah, let it be. Okay. Okay, see. So we can see, right? We have this class name app and the class name as app header here, right? And the logo that we are seeing there, right? But there is no code, right? Where it is saying that, hey, you need to go ahead, plug that particular thing in the root element, right? So it is sure that it is coming from here. Let's try to change this class name to, let's suppose, something else, right? And let's save this. We'll revisit this. And now let's see this. The class name is changed, right? So it's for sure that the class name is coming from here, right? But there is no code as such which is saying that, hey, you need to plug this component there, right? So that is the code in this index.js file, okay? Now come to this interesting file. It is saying
React DOM dot render. Okay. And what React DOM is, I'll explain this as well. Okay. So it is saying React. Okay. So the page, the web application, right, is displayed in a DOM, right? DOM, pata hai sabko? You guys know about DOM? Correct? So the pages are displayed in a DOM, and DOM is a tree-like structure, right? Ye clear hai? Which has parent starting from the document node, then you have the HTML node and all, right? So all the nodes are arranged in a tree-like structure starting from the node document all the way up to all the smaller elements, right? So these are having the siblings, child, parent, all those things, right? So DOM is a tree-like structure. So for now, just understand, forget about this React word. Okay, I'll explain why this React DOM is there. Okay, and how it is special. But for now, just think it is saying DOM dot render. Matlab, you just need to render this component. Okay, in the DOM. Okay, we have a React application. Okay, and you just need to pass on the app component, right? And app, see, app we are importing from the app.js file. Okay, .js .js is optional. You can eliminate .js file extension at the last. It will automatically import the correct file. Okay, that's what we are not writing the .js. You can write it like this as well, app.js as well. Okay, it will work perfectly fine. Okay, so it is saying import this app component. Okay, and display this app component here. Okay, see React dot render. This method is taking two arguments. One is this component. Okay, the another one is this element, right? And this element is exactly point to document.getElement by id root, right? That means go in the web page, go in the DOM, find the element with a root id and try to render this element inside that. This is exactly what it is saying. Got this? Okay, why I got rid of that react.strict mode? Okay, because exactly for exact same purpose I have got rid of that strict mode. Because don't get confused by the because see, this boilerplate course give you the code base, right? With some knowledge, it expects you that you will have some knowledge about React. That's what specifically it gives you some concept which is slightly high level concept. Strict mode is still very simple concept, but I'll cover that concept later on. That's what I've just got rid of that particular line. Okay, because this has nothing to do with the render. That strict mode has nothing to do with the render. I'm explaining the render function. So let's understand this and explain the strict mode later on. Okay, when we'll take the use case for the strict mode. Okay, so for now, this render method, okay, takes a component and what it does, it displays on the element found by the id root. But here document.get was not assigned to a variable. How it is accessing the root id? See, document.getElement. This is the second parameter of this method, right? Document.getElement by id root, right? So in the function, it is taking two parameters. First is the component, second one is the root element, right? And this react.render, what it does, it says, hey, what is the second element? What is the second parameter? Okay, some element referenced by root. Okay, let me find that element. Okay, and display the app component in this. So if we'll change this root to root 1, right? Will this work? If we change the root to root 1, right? Let's see there. Okay, nothing is there, right? Now you have the root element. It is not a compilation error. Understand? It is not a compilation error, but you will not be able to see any component. See, you have the div id is equal to root, right? Why? Because it was written inside your index.html, but React, but React DOM does not know anything about
this root element now, right? Because you are putting the element in the root 1 and there is no root 1. So that's why we are not able to see any content here. Now, if we just go ahead in our index.html and change this root to root 1, okay? Bingo, we have the file, right? We have the content here. And come here, see, the div ID is now root 1, right? Got the concept how the React DOM dot render works? Clear? Okay. So we got this. Okay. Now let's come back to this React DOM dot render, right? We know about our DOM, right? But what this is, what React DOM is. Have you guys speak more in this? Uh, Not probably because we have students from all the backgrounds, right? So we need to respect all the languages. We'll try to cover both the languages. Sometimes I'll give the examples in Hindi, sometimes in English. Okay, fine. So let's come back to this again. React DOM dot render. Okay. So we have heard about our normal DOM, right? Right. And we have a cool feature with React that is known as the virtual DOM, right? All of you must have heard the name virtual DOM. At least have you guys heard the name virtual DOM? Okay. Can any one of you try explaining what is virtual DOM? Blueprint for real DOM. Yes, exactly. Anyone want to unmute yourself and explain that? See, make the class interactive as much as possible because today's class is slightly boring because we are just going through the uh, boring definitions, right? But these are necessary to understand the concepts. So from the later point of time when we'll write down our own components, we'll debug our application. Okay. Then these knowledge are very important. Okay. Copy of original DOM. Yeah, both are correct. Blueprint of real DOM, copy of original DOM, virtual copy, right? But try to understand what this is, what this virtual component means, what this virtual word here is. So is it some kind of invisible cheese or something like that? Whatever we change in DOM, it first updates in virtual DOM, right? Okay, React is own DOM. See, yeah, Amit, yeah, perfectly. Yeah, unmute yourself and just explain. Am I audible? Yeah, you are audible. Okay. But see, when we talk about React, we don't use totally HTML and we don't use totally CSS. I mean, we do use CSS and Mhm. we don't use totally JavaScript. What we use, and in normal language, we call it as XML or improved version of XML or maybe another version of XML, which is called as JSX. Okay. तो क्या है ना कि JSX जो है वो Hmm. आपके ब्राउजर समझे ना समझे तो Hmm. JSX के थ्रू जब हम लोग डॉम में कुछ करते हैं तो उसके Mhm. लिए एक वर्चुअल डॉम रिएक्ट वालों ने बनाया है सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ वर्चुअल डॉम तो वर्चुअल डॉम क्या करता है जो Mhm. एग्जैक्ट हमारा डॉम मैनिपुलेशन या जो भी डॉम का जो भी फीचर है जो कुछ है वो सब चीज और जो JSX है उसके लिए मे बी काइंड ऑफ एक इंटरफेस बनाता है ताकि जो चीज यहाँ हम दिखा पाए वही चीज वो ब्राउजर पे मिरर कर पाएगा I mean, this is what my understanding of virtual DOM was. Maybe Okay. I'm Okay. incorrect. Yeah. So it's partially correct. I'll explain why. See, the first and foremost important thing that we learnt about Babel, right? You recall about Babel? Yeah, Javed, feel free. I'll just explain what the problem was, and then Javed, you can explain. Babel, right? What Babel does, it changes the content, right? Whatever you write in JSX to a normal JavaScript, right? Old version of JavaScript, right? So when you write the code in JavaScript, right, it is not going to be a problem for the browser to understand the JavaScript, right? Even if you have just the normal DOM, right? The browser can very well understand your normal JavaScript and it can very well update your normal DOM. Then why you need the virtual DOM?
So your definition of virtual DOM is exactly correct, but the reason is not exactly correct. Why? Because it's not that the React can't be made in such a way that they can't update the real DOM. They can. They very well can update the real DOM, because it's just the Babel already converts that into a normal JavaScript. Efficiency, yeah, efficiency is one important point. Okay, Zabit, you want to explain? Go ahead. Unmute yourself and Hello, just sir. explain. Hello, sir. Yeah. Am I audible, sir? Yes, you're audible. Actually, we have our DOM, a real DOM, which takes, Mhm. I think, which is not more efficient. Because Real DOM is more efficient. no, sir, it is not much efficient, sir. Okay, real DOM is not. Okay, more efficient. Okay. Yeah, Then. when it renders something, it renders the whole page. But our React Mhm, does not render the whole page. It mhm, only mhm. renders that part of the code which has been updated. That is why it has its own DOM. Correct, correct. So, yeah, well said. Okay. Okay, So thank you. now, yeah, what happens? See, partially it was answered by Amit. Partially you are correct. See, I'll combine both the points now. Okay. So what virtual DOM is? It's correct. It's a replica of original DOM. Okay. It's a copy of original DOM. It's a blueprint of original DOM. Whatever you want to say. Okay. It's a copy, blueprint, whatever. Okay. Of original, and it's normally a data structure which holds a DOM element. Okay. तो ये क्या करता है? What React does, it stores the copy of the DOM in its memory. Okay. In an efficient manner. Efficient manner मतलब क्या? कि जिस तरीके से रिएक्ट को अपडेट करने में आसानी हो, ठीक है, वो रिएक्ट एलिमेंट को वहां पे स्टोर करके रखता है इंस्टेड ऑफ दिस आपके नॉर्मल यूआई एलिमेंट की तरफ पे. ओके. एंड whenever you update something in your React application, it actually updates that into virtual DOM. ठीक है. तो जैसे ही virtual DOM में अपडेट होता है, it tries to match कि is there any difference between the virtual DOM and the real DOM. If yes, it will just try to replicate those nodes. Okay. It won't try to re-render that entire DOM. That's what sometimes the virtual DOM is faster. Correct. It only actually creates two virtual DOM, one for the previous, other for the updated one, and it maps with the original DOM if there is any difference. And as it's a in memory, it's a React optimized structure, right? That's what it is much faster than comparing to